तिलक लगा के मिट्टी का तू बाजी आज लगा ले। ओ तिलक लगा के मिट्टी का तू बाजी आज लगा ले। तुझ में जो चिंगारी है उस शोला आज बना ले। जान लगा के खेल खिलाड़ी, ओ जान लगा के खेल खिलाड़ी, साथ हमेशा स्पोर्ट्स इंडी। शान बढ़ा तू रहे अगाड़ी, जीत की भाषा स्पोर्ट्स इंडी। स्पोर्ट्स इंडी, स्पोर्ट्स इंडी, स्पोर्ट्स इंडी, स्पोर्ट्स इंडी, स्पोर्ट्स इंडी, स्पोर्ट्स इंडी, स्पोर्ट्स इंडी। Good evening and welcome to yet another episode of Sports Indie. Sports Indie always tries to discover areas in the sports world which are less discussed and underhyped. But surely those all topics are of utmost importance for the overall growth of the sporting sector. Keeping this thought in mind, my friends, Sports Indie has started a new series known wherein we introduced to you some offbeat sports, or we talked about those sports which are of currently emerging globally. So far we have introduced to you pickleball, then we discussed about chronum, and today's episode we will be discussing a totally new sports called dew ball. And to tell us a dew ball, we have here today Mr. Yuvraj Padole from Nagpur, who is the key person in the promotion of dew ball nationally as well as internationally. Mr. Yuvraj is also coordinator of International Federation of Dew Ball. So without wasting much of time, let me introduce Yuvraj. Yuvraj ji, please welcome to the show. नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और साथ ही स्पोर्ट्स इंडी परिवार का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं ड्यू बॉल फैमिली की ओर से कि हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है कि हम जो आज मैं बताना चाहूंगा जो इंडिया से और इंडिया स्पोर्ट्स है, मेड इन इंडिया स्पोर्ट्स है ड्यू बॉल के बारे में आज आपके माध्यम के थ्रू हम सबको जानकारी देंगे। सो धन्यवाद इस अपॉर्चुनिटी के लिए। To welcome. Before we go and before we listen from you what is meant by dew ball, I will request Miti Creation to show the small AV audio visual about dew ball, and please start about our chat. Sure.
Good. That was really very impressive audio video. Thank you for sharing this. Thank Yuvraj thank come you so much. let's check. What is meant by dew ball? Will you explain a little bit about dew ball, how it is being played? श्योरली सर, मैं आपको ड्यूबॉल के बारे में पूरी जानकारी दूंगा, साथ ही जो इस माध्यम से जो लोग देख रहे हैं उन्हें भी इस बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि ड्यूबॉल जो स्पोर्ट्स है वो एक मेड इन इंडिया स्पोर्ट्स है, जो जो इन्वेंट हुआ है नागपुर से 2013 में, जिसके फाउंडर है मिस्टर फिरोज खान सर। फिरोज खान सर एक हॉकी प्लेयर है जो रेलवे को रिप्रेजेंट करते हैं। अपने उस दौर में उन्होंने काफी अच्छी हॉकी खेली है। साथ ही वो एक गॉड गिफ्टेड स्पोर्ट्स पर्सन है जो उनका फुटबॉल एंड हॉकी इज पैशन। फुटबॉल में आपने एक बड़ा क्लब का नाम सुना होगा, इंडिया का मोहन बगान क्लब, यंग मुस्लिम क्लब। सो वो वहां से रिप्रेजेंट कर चुके हैं और काफी धमाकेदार एंट्री की थी, उन्होंने नाम कमाया। और इसी को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने एक लाइफ में एक मोटो लिया कि मैं कुछ करूंगा जिसके माध्यम से स्पोर्ट्स के थ्रू फिटनेस को भी डेवलप करूं। आज आप भी देखते हैं और हम भी देखता है कि आज ज्यादातर यंग जनरेशन डाइवर्ट होती जा रही है मोबाइल्स पे। गेम जो खेला जाता है वो ग्राउंड पे खेला जाता है, ना कि हाथों में या किसी बेसिस पे। हमारी मेंटल कैपेबिलिटी कम होती जा रही है आगे के जनरेशन की, थिंकिंग पॉसिबिलिटी लेस हो जा रही है, एज ग्रोथ कम होती जा रही है। इसके सबसे बड़ा रीजन है हमारे हिसाब से फिटनेस, सॉरी। सो फिटनेस इज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ईच एंड एवरी वन पर्सन लाइफ। इस मोटो को रखते हुए उन्होंने इस गेम को बनाया। इस गेम का लॉजिक ऐसा हुआ कि जस्ट सर एक बार देख रहे थे कि टेरिस पे कुछ बच्चे बास्केटबॉल का एक बोर्ड रहता है, उनका जो जो बास्केट रहती है वो टूट चुका था। तो उन्होंने उस बॉक्स का जो पीछे एक बॉक्स आता है, उन्होंने बॉक्स को ऐसे ऊपर लटका दिया दीवार के ऊपर, और 2 ही बच्चे थे, बस बॉल को मारते थे, अगर उस जगह पे लग गया तो उनको पॉइंट करते। तो ये लॉजिक, ये थिंकिंग, ये सनराइज की जो रोशनी, बस इस रोशनी से उनके दिमाग में क्लिक हुआ। उन्होंने हाथों से डायमेंशन बनाया। उनके कुछ एमपीएड बीपीएड फिजिकल एजुकेशन वाले फ्रेंड्स थे, उनके साथ मिलके उन्होंने कुछ बेसिक रूल अपॉइंट किए, जिसपे आगे डेवलपमेंट हुआ, आगे कमिटीज बनी। और 2013 20 सितंबर जो वर्ल्ड ड्यूबॉल डे के दिन में 20 सितंबर को मनाया जाता है, इंडिया में नहीं पूरे विश्व में। सो इसकी शुरुआत हुई और या बस जैसे नेसेसिटी इज इन्वेंशन, मदर ऑफ इन्वेंशन, ऐसे हो गई एक्चुअली। यस 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 संक्षेप में बताइए एक्चुअली ड्यू बॉल, व्हाट इज दैट कॉम्बिनेशन ऑफ गेम्स इन ड्यू बॉल? ड्यू बॉल कैसे खेला जाता है? या सो इस गेम का अगर आप गौर किया होगा कि इस गेम में काफी फिटनेस है, फ्रंट में भागना है, पीछे आना है, कवर करना है, टारगेट पढ़ना है। तो इस गेम का जो मतलब जो फॉर्मेशन है, इट्स एन एक्चुअली एन फुटबॉल कॉम्बिनेशन ऑफ बास्केटबॉल, फुटबॉल, हैंडबॉल। सो अगर आप इस गेम के रूल्स देखेंगे काफी मिलते जुलते हैं फुटबॉल से। बास्केटबॉल के कुछ पैटर्न्स है इस गेम में, जैसे आप टारगेट्स देखेंगे, उसमें डी पैटर्न देखेंगे हमारे गेम का। जो फील्ड है, आउटर फील्ड है, फुटबॉल के डिजाइन से रिलेटेड है। हैंडबॉल के पैटर्न में हम आगे जाते हैं, पीछे आते हैं, गोल स्कोरिंग जोन है इसमें। तो काफी सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है, जिससे हमें थ्रू एंड आगे भी भागना है, पीछे भी आना है, गेम को रोकना है, टीम बिल्डिंग के साथ गेम को खेलना है। एक सर्कल है फॉर लाइक 4x4 में, अगर मीटर से करो 1.20 मीटर्स का एक बोर्ड रहता है, जिसकी हाइट रहती है ग्राउंड लेवल से 13 फीट। और जो बोर्ड रहता है उसमें डायमेंशन है, जिसको मैं आगे आपको काफी अच्छे से जानकारी दूंगा। उसके अंदर एक सर्कल है 60 सेंटीमीटर डायमीटर का, जिसमें गोल मारना पड़ता है एक डिस्टेंस से। सो ये सब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को देखते हुए इस गेम का मतलब फॉर्मेशन हुआ है। मतलब फुटबॉल, हैंडबॉल एंड बास्केटबॉल, all three exactly is dew ball, isn't it? yes That's good. But can you briefly tell us the rules of this whole thing? And especially I am interested more in how the fouls are being counted. What are the faults and what are the scoring pattern of this sports? श्योर सर, जो मैं बेसिक रूल है मैं उनके बारे में बताऊंगा कि अगर आप बेसिक जान गए तो ड्यू बॉल को जान गए। सो इस गेम में सबसे पहला जो रूल्स होता है, सबसे अच्छा आप 5 सेकंड तक बॉल होल्ड कर सकते हैं। अगर आप एक और बार टैप करेंगे आपको 5 सेकंड मिल जाएंगे, आप बॉल को ए साइड से लेके बी साइड तक लेके जा सकते हैं।
बट उसके बाद आपको बॉल को पास करना है. बॉडी टच इज नॉट बीन अलाउड. इस गेम में सबसे पहली चीज 7 प्लेयर खेलते हैं, जिसमें 6 प्लेयर्स एज अ प्लेयर रहते हैं, 7 प्लेयर एज अ गोलकीपर रहता है. सो और टोटल टीम मेंबर कंसिस्ट होती है 12 प्लेयर्स की, नेशनली प्लस इंटरनेशनल रूल्स के हिसाब से. इस गेम में अनलिमिटेड ऑफ एक्सचेंज है, जिसमें आप हम एक्सचेंज कर सकते हैं प्लेयर्स को. एक 2 पॉइंटर जोन बना हुआ है हमारा, जहां से आप जैसे बास्केटबॉल में आप देखा होगा एक बड़ी डी से अगर स्कोर करते हैं तो 3 पॉइंट्स मिलते हैं. तो हाफ ग्राउंड से एक डॉटेड लाइन बनाई जाती है, 2.5 मीटर्स एरिया से डिवाइडेड रहती है. वहां से अगर गोल स्कोर किया तो 2 पॉइंट किया जाता है. बॉडी टच इज बी नॉट बीन अलाउड. यहाँ पे 2 डी भी है इस गेम में, अगर आप डी भी देख पा रहे हैं. इसमें एक जोन रहता है जो आउटर डी रहती है, वो रहती है गोलकीपर के लिए, और जो स्मॉल डी रहती है उसमें गोलकीपर एंटर नहीं कर सकता. अगर गोलकीपर अपना डी एरिया छोड़ के बाहर आ जाता है, ही इज ऑल्सो ट्रीटेड एज अ प्लेयर, बट गोलकीपर को अलाउड नहीं है हाफ ग्राउंड से क्रॉस करने का. बाकी 6 प्लेयर को कभी भी गोल स्कोर करना है तो हाफ ग्राउंड क्रॉस करना है. अगर डिफेंडर डिफेंड करते करते अगर अपनी डी कट कर देता है, मतलब जोन की जो लाइन कट करता है डिफेंडर, तो अपोजिट टीम को पेनल्टी मिल जाती है. इसमें आपको अंडर आर्म पास इज नॉट अलाउड. अंडर आर्म पास हमारे इसमें अलाउड नहीं है. आपके पास 5 सेकंड्स बॉल है, आप वहां से ए जोन से लेके हाफ ग्राउंड से दौड़ सकते हैं. आपकी स्टैमिना, आपकी एजिलिटी, आपका एंडोरेंस पे डिपेंड करता है. कॉर्नर्स है, फुटबॉल की तरह कॉर्नर्स में डेवलप्ड है. एक पेनल्टी स्ट्रोक्स है इसमें. और ये टोटल गेम आपको मैं बता दूं खेला जाता है ऑफिशियल जो इंटरनेशनल लेवल के टाइमिंग के हिसाब से, जो है 20 मिनट्स का फर्स्ट हाफ, 10 मिनट्स 5 to 10 मिनट्स का ब्रेक रहता है, और 20 मिनट का सेकेंड हाफ. ऐसा खेला जाता है सर. या सो दीज आर द मोस्टली या दिस. And what are the ground specification? The ground specification is of football, or is it of basketball ground? Ground size of the Yeah. ground. I will tell you brief about this. There are 2 ground dimensions, sir. Okay. First of all, for senior and junior, there are different. The ground is same, and for sub junior, ground is different. And the board which is being played, it is same for this. This game can be played on beach also, indoor also, outdoor also, synthetic court also, turf also, mud also, because we have already played all these forms of game in forms of pattern on the field. मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, ये एक अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ स्पोर्ट है. अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ स्पोर्ट्स मीन्स कैसा? अगर आपके पास बोर्ड नहीं है, तो आज हमने हमारे इसमें जो विलेजेस के बच्चे हैं 2 बाम्बू के साथ टायर का होल लगा के भी खेलते हैं. अर्जेंटीना में जब फर्स्ट टाइम छोटे बच्चों के लिए खेला गया था जो 13 एज के थे, उन्होंने 4x4 का कट किया था जो बोर्ड की हमारी डायमेंशन है, और एज अ चार्ट पेपर उन्होंने स्टिक किया था. सो दिस इज एन अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ स्पोर्ट्स. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड द गुड इंपॉर्टेंट थिंग, सर आज आप भी एक स्पोर्ट्स पर्सन रह चुके हो, और आज एक इंडिया एक ऐसा कंट्री है, इंडिया ही नहीं वर्ल्ड में काफी सारी जो लोग हैं जो स्पोर्ट्स इसलिए नहीं खेल पाते कि कहीं ना कहीं फाइनेंशियली बैकवर्ड्स हो जाते हैं. राइट? इफ आई गेस आई साउंड यू लॉजिकली ऑन दिस. सो डी बॉल की मैं खासियत भी बताना चाहूंगा सर. जैसे मैंने कहा अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ स्पोर्ट्स है, तो इसमें यस Going to ask you those questions because I heard that you have taken this game from India to other countries also. So we will be definitely how you are promoting this in India as well as how you have taken it other countries also. But before that, one of the questions which is in my mind is what are in football there are red card, yellow card like that. In this sports also there are penalty to award it to players. How many penalties are there in this game? Yeah, penalty is in form that if you are under the goal scoring zone, suppose हमारे स्पोर्ट्स में अगर टैपिंग मतलब बॉल ऐसे हम मार रहे हैं और पीछे से कोई टैप करता है अंडर द गोल पोजीशन which is not allowed under this zone, it has been given. If he does an intentional foul, it has been awarded as a penalty. If player cut out the D, so it has been जैसे जैसे मैंने कहा डिफेंडर अगर डिफेंड करते हैं तो अपनी आउटर डी कट करेगा तो उन्हें पेनल्टी दी जाती है. वैसे ही गोलकीपर अगर बॉल गोलकीपर के छोटी डी के अंदर चला गया है, जब तक वेसल्स डेड नहीं इसको डिक्लेयर करता अगर अपोजिट टीम को पेनल्टी दी जाती है. पुशिंग इज नॉट अलाउड इन आवर गेम बिकॉज हमारे गेम में how many levels are there? 1 level penalty, 2 level penalty. Seriously say, how many levels of penalties are there? Depends upon the. Yes, it's exactly as you say. It depends upon the intention of fouls.
कभी भी जैसे अगर गेम्स होता है तो वी वार्न द प्लेयर्स फर्स्ट, द ऑफिशियल जो रहता है, जो रेफरी रहता है वो वार्न करता है सबसे प्लेयर को. Hmm. इट डिपेंड अपॉन द सीवियर फाउल, कितना सीवियर फाउल है. बट इट्स एन नॉर्मल फाउल, रेफरी कम्स एंड लाइक वार्न्स हिम. Secondly, also he tries to warn you, but if it's a major foul, he will give you a yellow card. Second, Yellow card. another one, yeah, then another again yellow card, and two yellow cards will then convert it into a red card in the same pattern it goes on. Yeah, Correct. That's good. Yuvraj ji, you are really bringing finer points of this whole thing. Now let's yeah, discuss about the ball itself. Dew ball, obviously, I'm more interested in the name also. Why this is called yeah, dew ball? That sure, question will be later. But before that, will you explain a little bit about the ball, its size, its air yeah, pressure, and its yeah, material of the ball? Is it a heavy? Is it a very hard hitting to the body? How can you describe that ball itself? sure. So first of all, I will like to tell you all that we are having an official ball sponsor. Our official ball sponsor is Spartan. Spartan is an, you all are aware about the Spartan company. They are from India itself, and they have been sponsored to Chris Gayle, MS Dhoni, and many other players. In the same way, we had a word with them. So, this ball size of a ball, if you go and see the basketball, Hmm. there is a size one ball, which is the smallest ball of the. So, the Right. exact size of the basketball first size is the same of dew ball, which is having a synthetic material, uh, good grip material, which is not plain, which is having a good grip. Its air pressure and everything goes on dependability of. It's a common size for junior, sub junior, and senior. First of all, anywhere in beach also it has been played. It is not hard hitting. It is just simple, and if you calculate its weight without air and with weight, I'm telling you an approximate. It will goes on 160 to 175 grams, sort of, sir. That's good. Yuvraj ji, now coming Yeah, back to that question, why it is called dew ball? What is that yeah, history of that logic behind the name dew ball? yeah. या सो सर, आप सभी ने स्पोर्ट्स जो देखे, हैंडबॉल में हैंड से रिलेटेड है, बास्केटबॉल में बास्केट रिलेटेड, बट डी बॉल का लॉजिक थोड़ा सा डिफरेंट है, जो थोड़ा सा ट्रिकी नहीं है पर थोड़ा मजेदार है. सो पहले आपने देखा था कि हमारे यहाँ पे माउंटेन ड्यू आई थी, जो अभी भी चल रही है, राइट सर. बट द बेसिक लॉजिक इज कि आपको पता है, जब हम, अगर जैसे हमारा दोस्तार है फॉर एन एग्जाम्पल, तो कभी हम ट्रीट देते हैं अपने फैमिली मेंबर्स को भी और एक दूसरे को भी. जब हम एक ट्रीट देते हैं, सपोज आज मैंने आपको पार्टी दे दी, एग्जाम्पल, तो ये आज एक पार्टी आपके ऊपर, मेरे पर जो ड्यू थी वो तो खत्म हो गई, अब आपके ऊपर पार्टी ड्यू होगी. इन द सेम वे, Okay. अगर एक टीम दूसरी टीम पे गोल स्कोर करती है, तो अपोजिट टीम Okay. के ऊपर भी ड्यू हो जाता है. सो जो ड्यू ज्यादा करेगा वो गोल विनर होगा मैच का. That's या nice. That's really या good and creative, out of the box thinking. यस Now यस let's यस promotion part. I'm sure I'm really happy to introduce this game as a India-born sports. यस This game is originated in India in the city of Nagpur, and from here यस you guys taken it to the rest of the world. How this या journey? Will you briefly tell us in how many श्योर. you have taken it to the India as well as outside world, सर outside मैं India also? आपको ब्रीफ में बताऊंगा. 2013 में इसकी शुरुआत हुई है, आज 2021 चल रहा है. इन 7 से 8 सालों में हमने इस गेम को एशिया ही नहीं, इंटरनेशनली डेवलप किया है. इंडिया के जब हमने फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया था, तब हमारे पास 15 से 12 स्टेट पार्टिसिपेट की थी. आज हमारे पास 27 स्टेट्स है और 5 यूनियन टेरिटरीज है हमारे पास करंटली. आज हमारे पास नागालैंड रिसेंटली ज्वाइंड अप हुई है, और सिक्किम जो रिसेंटली ज्वाइंड अप हुआ है हमारे पास. उसके बाद ये स्टेट हमने इंडिया में डेवलप किया. जब हमारे नेशनल होते गए, कैटेगरीज वाइज गेम होते गए, you know that social media and basic form of which can be, if you can utilize in correct way, you can get more and more good. Our marketing strategies, our game development programs, our refreshers courses, basic and personal in touch with the explanation of the sports to the people, to the secretary of the states of India. So let's, after that we will be growing up, and we are growing up. So हमने कुछ categories develop की है.
आज विलेज में ले जाने के लिए हमारे पास गेट इनटू ड्यू बॉल का एक प्रोग्राम है, जिसमें हम बेसिक सेमिनार्स लेते हैं, रेफरी कोर्सेज करते हैं रेफरी डेवलपमेंट के लिए इंडिया में। और हम बिलीव कीजिए सर, ये भगवान की दिया और सबका इस गेम के लिए प्यार है। आज एक ऐसा नेशनल नहीं होता है जहाँ पे हमारे पास अबाउट, अगर मैं कैलकुलेट करूँ, तो 55 टू 60 टीम पार्टिसिपेट करती है, इंक्लूडिंग गर्ल्स एंड बॉयज, हर नेशनल में। Very हमने Yuvraj ji, या I'm happy that you are really taking hard steps to promote in India. यस But यस our viewers are more also interested to know how you took it to internationally and which of the countries you यस have taken. यस बट सर, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, ये अकेले मेरे कारण नहीं हो सकता, ये अकेले Right. हमारे फाउंडर फिरोज खान सर के थ्रू नहीं हो सकता, ये इंटरनेशनल कमेटी के जनरल सेक्रेटरी मिस्टर शोएब सिद्दीकी के कारण नहीं हो सकता है, ये जनरल सेक्रेटरी ऑफ एशिया मिस्टर जो हमारे डूंगर सिंह राजपूत सर है उनके कारण नहीं हो सकता। ये एक हमारा टीम वर्क है, हमारे हर एक एक कमेटी जी जान से रात भर काम करती है, सर काम करते हैं, सर खुद एक प्लेयर होके प्लेयर, आज हमारे गेम में मैक्सिमम लोग एज अ प्लेयर एसोसिएटेड है, जो पूरे प्लेयर से एक दूसरे का साथ बनते हैं। ये 5 उंगलियां अलग स्पोर्ट से होगी, अलग फील्ड की, पर जब ये ऐसे मिल जाती है तो इसलिए हम एक एक सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं। Very Secondly, good. Very to good. coming towards your question, sir, कि how we have developed and internationally. So basically मैं Especially, आपको बताना चाहूँ, I'm interested in which countries you have introduced this outside India. yeah, Like yeah. India, you So told, and otherwise sure, in Latin America. yes. So right now, currently internationally, we have 30 affiliated countries currently. That's Coming yeah, towards yeah. let's start with the like I will just count out the name, so you will be good for it. So it's India, That's good. Bangladesh, Afghanistan, Pakistan, Bhutan, Sri Lanka, Maldives, then Philippines, Indonesia. We have That's good. Thailand. Then we are going for African countries. It's Togo, Cameroon, Kenya. We Yeah. have Ivory Coast, Zimbabwe. Many countries. Many countries. If we have Oman, UAE, So, Yemen, beauty. Saudi Arabia. Yes. And coming to That most of the Latin America, we have about Argentina, we have Argentina. Uruguay, we have Chile, and we have Yeah, Mexico recently, and we have Spain. So that's good. I may have missed, yeah, I may have missed out some 1 2 countries name, but I guess you are aware we are growing how faster. Absolutely, we are quite impressed, and this is a very tough task you have undertaken. We wish you Yeah, good luck. At this point of time, thank perhaps I would like to welcome our managing editor and you. founder, Ms. Priya Badwe, madam. She is about to enter this chat also. Yeah, If she is ready, yeah, here she is. Madam Supriya, आप स्वागत है. We welcome you both, Supriya as well as Yuvraj once again. Supriya madam, as Yeah, you yeah. know, Thank you. she is the brainchild of this whole Sports Indie. She is an entrepreneur as well as a managing editor of this Sports Indie. This whole concept is of hers. So welcome to show, madam. Uh, Please, if you can also formally introduce or rather welcome Yuvraj ji, it's your time. Yes, very warm welcome, Yuraji, on the platform of Sports Indie, and all on behalf of team. I really means like I joined late today, but yes, these offbeat games are very welcome by the really the viewers of our Sports Indie channel. And yes, innovation is at our heart, and definitely today's with your today's inputs and your today's experiences, the audience might have captured the good inputs about this innovative game Blue Ball. So over to you now, Sunilji. But again, since you are here, and this is whole idea is also yours. Very briefly, I would like to ask Supriya Madam again, why you thought of such creating such kind of episode of big sports, less known sports. Is there any thought behind it? Very briefly, will you explain it, Madam? Uh, See, Sports India is all about sports. It's establishing sports ecosystem and understanding various aspects of sports. Means like as far as our country is concerned, see, sports is popular, very popular, but we are more like kind of a viewers.
we as a person, we don't want to much participate. We don't want to make sports as your integral part of daily life. So that's Well, why, see, and yes, because for any sports you require your strength, stamina, flexibility, and of course for this to attain, we need some fitness. So, and for fitness, you need some routine activity. You have to specify your some time of the daily routine for fitness activity, and then you have to find your some time to for sports, for a particular sports which you want to pursue. So but as Indians, maybe now with new generations, yes, fitness is their motto and they are more focusing. But overall, we are more like inclined to Bollywood and entertainment and everything. We are pursuing sports. There is no issue, but as an entertainment, as a viewer, as a spectator, not as a participant. So what we thought, ki, how we can involve sports as our daily routine, and how we can create more fun so that we can enjoy sports and we can gain stamina also. So that is what we were thinking, ki, me and Uttaraji, we were just discussing how we can make it as a more motivating or more inspirational, so that people will get more attracted, and how with sports, how we can create more career opportunities. See why something is not get accepted, because when if I see ki by entering in sports, I have lot many job opportunities which are required for my survival. When we link your whatever, see, we no one can deny that for survival money is important part. And when you feel yes, there are commercial opportunities, you are going to receive some remuneration for any activity you are contributing towards sports. Of course, young generation will get attracted to it, but as of now, that's something is lagging, that we all know. But yes, so by taking such innovative sports, can we add fun element, and also can we add some commercial aspect, so that everyone will get attracted, and then then we started about this offbeat games. Yes. we will take this clue, and I will take this last point to Yuvraj ji again. What Yeah. Supriya madam has initiated from Dew Ball. What do you think are their career options available for budding Yeah. athletes? Yeah. Our last other topic was that, and I pass it Yeah. on to as a promoter of Dew Ball. In Dew Ball, what are the career options of new athletes, young Yeah. athletes? Yes, sir. You are absolutely right. And the view which ma'am shared, fitness, stamina, some is everything is important, and for the survival, that thing is also important. So, ma'am, I will continue with you some points that the करियर अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आज इंडिया में अगर एक प्लेयर खेलता है तो एक नौकरी के लिए खेलता है, अपने परिवार को ये पेट पालने के लिए खेलता है, और इसलिए नहीं खेलता कि उसको उससे इंडिया का गौरव बढ़े। सबका सपना तो जरूर रहता है कि इंडिया का टैग लगे, पर उस इंडिया का टैग का मायना कितना है, उससे उसका इंपॉर्टेंस कितना है, वो एक प्लेयर में, एक स्पोर्ट्स पर्सन में, वो रियल स्पोर्ट्स पर्सन को ही जानता। आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ड्यू बॉल के माध्यम से हम ये कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले आज हम रिसेंटली स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज हो गए, जिससे हम ग्रास रूट लेवल पे डेवलप करेंगे, स्कूल लेवल पे डेवलप करेंगे, जिसके साथ एथलीट्स को एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। सेकेंडली, हम एथलीट को ही नहीं सर, साथ ही जो उन्हें सिखाने वाले कोचेस है, रेफरी से, उन्हें भी एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा स्कूल लेवल पे कोचिंग्स के लिए या एकेडमिक्स के लिए डेवलपमेंट के लिए। थर्ड, जो लेट्स कम अबाउट द मोर लाइक यूथ, लाइक जो कॉलेज लाइफ में खेलते हैं, उनके लिए हमने अभी रिसेंटली बात की है ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के जो डायरेक्टर है, उनसे हम कुछ ही दिन पहले मिलने गए। सो उन्होंने कुछ जो उनकी प्रोटोकॉल्स है उसको फुलफिल करने के लिए हमसे जो डॉक्यूमेंट्स मांगे, हम जैसे सबमिट कर देंगे, तो मैं आपको श्योरिटी देता हूँ 2022 में आपको ड्यू बॉल ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में देखने मिलेगा। उसी के साथ
हम कुछ दिन पहले अनुराग ठाकुर जी से, जो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उनसे हम मिले। सो मैं आपको बताना चाहूंगा, और ये इंडिया में अब तक आप देखते होंगे, हॉकी हुआ है, बैडमिंटन हुआ है, कबड्डी हुआ है, ये ऐसी गेम जो ए लेवल ग्रेडेड को कैटेगराइज कर दिया गया एक्चुअली। बट मैं आपको बताना चाहूंगा कि ड्यूबॉल महाराष्ट्र मुंबई में एशियन ड्यूबॉल चैंपियनशिप होने वाली है, जिसमें हमें अप्रोक्सीमेटली 14 कंट्रीज पार्टिसिपेट करेगी, जो मोस्टली That is 2022 में, या थैंक यू सर, फरवरी टू मार्च में देखने मिलेगा। सितंबर और अक्टूबर 2022 में वर्ल्ड कप होगा। मैं जहाँ से जो हमने मेहनत की है, आई गेस about for sure minimum to minimum in World Cup you will be seeing 20 to 22 countries, and good. in Asia we have expected about 14 countries had given their confirmation, but due to the COVID procedure we are lacking with the what we can say permission letter. So we have already submitted to the state government and also to the government of India. So soon Very it good. will be announced. And what Definitely. you said, the platform you're talking about, so I will just explain you, not in India, because when you get a platform at the upper level, then only the all the categories has been related. So what Okay. we are doing Dubol Premier League for seniors category, Dubol Premier League for juniors category, get into Dubol program for the grassroots level and for the village level. Then we will Good. having a youth national championship, World Cup for senior, junior national World Cups, intercontinental championship. Yes, As a Africa just federation, suppose. as a federation, you have laid down the roadmap for the career Yeah. growth of athletes. Yes. I really congratulate. Very few sports organization does this, and Blue Ball Federation is doing that. It is fabulous. Coming, we will be entering into last phase of this show because we have a time Hmm. constraint. Yeah. The constant, we talk about all good parts, all opportunities. Now, can you briefly tell us what are the constraints in promotion of this game, U ball? What are the challenges you are facing currently in Yeah. promoting of this? Very briefly, because we are very सर, sure. या सर, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 2 साल में हम काफी पीछे गए कोविड के कारण, बट मैं श्योरिटी देता हूँ हम जो कम बैक करेंगे वो जोरदार करेंगे, धमाकेदार करेंगे। उसके बाद जो जो चैलेंजेस आते हैं वो फाइनेंशियल चैलेंजेस सबसे ज्यादा आते हैं, क्योंकि आज जो फाइनेंशियली क्योंकि कुछ भी एक टूर्नामेंट भी, छोटा सा भी टूर्नामेंट करना है, अगर मुझे ट्रॉफी लानी है, आज 5 से 10 हजार रुपए का खर्चा लगता ही है मुझे, नहीं एक छोटे से छोटे एसोसिएशन को, डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन को। So the sponsorship is the biggest, or financial is biggest problem, and the support, players को support चाहिए सिर्फ। ओके, आप जैसे एक डायलॉग है, मूवी है खड़ूस, उसमें कि पॉलिटिक्स हटा दो, सपोर्ट कर दो, हर गली में प्लेयर है, चैंपियन है, सब है, और ये रियलिटी है। अगर कहते हैं ना खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, तो एक्चुअल में खिलाओ तो सही में इंडिया बढ़ेगा, और देश भी क्या, इंटरनेशनली ग्लोबली नाम करके आएगा। आई नो, बहुत ही कुछ अच्छी बातें कह दी है, बहुत ही संक्षेप में आपने कर दिया है। बिफोर आई टेक ask question, madam, you want to ask something? No, it's okay because I think he has explained most of the things. Yes, yes. So, before I wrap it up, but I would like to thank Supriya madam for Sports Indie for having initiated this kind of episode after episode. Also, Miti Creations, Uttara Mone, her teammate Amay also for producing such kind of a beautiful episode after episode. My very last question to Yuvraj, is this sport is more advantageous to boys and it is disadvantageous to the girls? Because this game I saw, it's very athletic, थोड़ा rush है, rowdy जैसा लग रहा है. So is this, do you think it's so? Is this argument is correct, whether it is not in favor of girls? ओके सर, इसका मैं एक ही लाइन में बता दूंगा आंसर। अगर आपको इस लाइन में मैं आपको बता दूंगा, हमारे इसमें इस कैटेगरी 12 कैटेगरी से लेके 44 इयर्स के जो मॉम एंड डैड्स है, जो एज एल्डर पीपल है, ये गेम खेलते हैं। सो ये गेम फिटनेस के लिए ही बना है। सो इसमें मैं आपको उल्टा ये कह दूं, इंजरी जो बाकी स्पोर्ट्स में ज्यादा होती है, इस स्पोर्ट्स में उससे कम है, क्योंकि हमारे में सबसे बेसिक लॉजिक है, बॉडी टच इज नॉट अलाउड। जब आप बॉडी टच ही नहीं कर सकते हो, तो देखो स्पोर्ट्स में इंजरी होना कॉमन है, पर उसका लेवल रहता है, 100% नहीं होगी। इस गेम में है, ऐसे नहीं कहूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, है, पर बहुत कम है। That's good.
With this positive note, let's close this for today's topic. We will definitely join you again on next Saturday with new episode, new sports. But till that time, before that time, I would request all my viewers to send us your feedback, your whatever appreciation or suggestions. We welcome you, and based on your suggestion, we keep trying improving this episode after episode. So till we meet next Saturday, it's time to say goodbye. Thank you, Yuvraj ji. Thank you, Supriya Thank madam, you, sir. and thank you all. Good day. थैंक यू सो मच ड्यूबॉल फैमिली की ओर से भी धन्यवाद. Thank you.